Hello, my dear students of CA Foundation. So, to help you all, we are just discussing the question paper of CA Foundation Jan 2025 attempt. उसका detailed solution discuss कर रहे हैं. First, we are starting with question number 1, जो compulsory है. 20 मार्क का question है, आपको मालूम है. True or false 12 मार्क का है. Then there is one descriptive question and there is one question on subsidiary books. So let's begin the journey. First is true or false. As you can see on the screen, we have the first true or false. As you can see, the first true or false is matching concept is based on accrual concept. Can you guess the answer? What it should be? Matching concept is based on accrual concept. Correct? The right answer is true. What is the reason? As you all know, accrual concept में क्या होता है? It considers occurrence of expenses in income, not the actual cash inflow and outflow. Same thing in matching also. It is based on occurrence, as in when the expenses and income are incurred, earned, it is recorded, and not on the actual cash flow. ठीक है? That's the right answer. Second objective में चले जाते हैं. It says customers of business should not be considered as users of accounts prepared by business. They are not interested in knowing the performance of the business. Do you think so? It is a false. Customers are interested, of course. क्यों? Because they are interested in knowing the stability and performance of the vendors. क्यों? Because उनको उनसे supply आता है, किस चीज़ों का, goods का आता है, सर्विसेज का आता है. सो उनका स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस. सो द आंसर इज फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं. अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो विल नॉट शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? डज इट शो द लोएस्ट वैल्यू? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट शोज द लोएस्ट वैल्यू. तो ये लोग बोलते हैं डज नॉट शो. व्हाट शुड बी द आंसर? फॉल्स. क्यों? क्योंकि फीफो में हम क्या करते हैं? वी ऑलवेज इशू गुड्स एज विच गुड्स आर इशूड? द वंस विच आर रिसीव्ड अर्लियर. जो हमारे लॉट में सबसे अर्लीस्ट है उसको इशू करते हैं. और इन्फ्लेशनरी कंडीशन है तो अभी जो खरीदा है वो एक्सपेंसिव होगा, तो जूना स्टॉक चीपर होगा, वो हमने इशू किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या ऐड होगा? चीपर गुड्स का वैल्यू ऐड होगा. तो ऑब्वियसली इट शुड शो द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. You guessed it right. Which method does not show the lowest value? That is your LIFO as well as weighted average. So I hope that's correct till now. The next question में चले जाते हैं. क्या बोल रहे हैं लोग? For redemption of preference shares, the proceeds from fresh issue of equity shares and debentures can be utilized. What do you think the answer should be? The answer should be yes, it is false. Why false? कौन सा proceeds are allowed to be used for redemption of preference share? Only equity, not debentures. Debentures are not allowed, only equity is allowed. क्या reason है? Because they are ensuring जो share holders का fund है that remains the same. वो कब होगा? जब आप issue of shares के पैसे use करते हो. और debentures, debentures का fund जो आएगा that will not keep the shareholder fund intact. Okay, so that's, I hope you have guessed it right till now. तो आगे बढ़ते हैं. Question number 5. What does question number 5 say? Bookkeeping and accounting are not synonymous terms. They are different from each other. What do you think? Are they same or are they different? Correct? They are different. And वो लोग भी बोलते हैं same नहीं है, मतलब different है. So what is the answer? True. क्यों? As you know, bookkeeping जो है एक recording aspect है and accounting जो है एक summarizing aspect है. बुक कीपिंग क्या करता है? डेटा प्रोवाइड करता है. एंड अकाउंटिंग का क्या करता है? डेटा प्रोवाइड करने के बाद वहाँ से समराइजिंग, एनालाइजिंग का काम शुरू करता है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, करेक्ट आंसर, ट्रू. वाई? लेजर में क्या रहता है? लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स द ऑल सेट ऑफ अकाउंट्स, मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब अकाउंट्स का उस किताब में आपको अकाउंट्स मिलेगा और उनके बैलेंसेस मिलेंगे,
which will form a base for trial balance. Correct answer, true. Fine. So that was 6 questions from true or false. Let's see भाई अगला क्या है. What is the next part after the true or false? Accordingly we will proceed. Yes, सब क्वेश्चन बी में बोल रहे हैं ये लोग. एक्सप्लेन द 4 मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. 4 मार्क का क्वेश्चन है. 4 फंक्शंस बताइए अकाउंटिंग का. दैट इज अ क्वेश्चन. होप यू रिकॉल. 4 नहीं, देयर वर 6 फंक्शंस. सो व्हाट वर द 6 फंक्शंस? Let's take a glance at that 6 functions and hope you are able to think right. What was the first function? Measurement. Correct. Second was forecasting. Correct. Third was control. Perfect. Fourth was decision making. Good. Fifth was government rules and regulations. Like that you have 6 functions in all. Let's see the 6 functions. Out of that एग्जाम में 4 चाहिए तो 4 लिख के आइए. मेजरमेंट, व्हाट डज इट मेजर? द पास्ट परफॉर्मेंसेस एज वेल एज द करेंट पोजीशन. और किस चीज़ में हेल्प करता है? फोरकास्टिंग में. किस चीज़ का फोरकास्टिंग? फ्यूचर का प्रॉफिट क्या होगा, इनकम क्या होगा, क्या ट्रेंड बन रहा है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. किस चीज़ का डिसीजन मेकिंग? इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में काम आ जाता है. दैट इज द थर्ड फंक्शन. फोर्थ, कंट्रोल. दैट मतलब व्हाट, हाउ डज इट हेल्प? इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट कि आपका जो सिस्टम है उसमें क्या वीकनेसेस है एंड उसके लिए जो आप मेजर्स ले रहे हो वो वीकनेस को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, एलिमिनेट कर पा रहा है, नहीं पा रहा है. क्लियर ऑन इट? दैट वाज क्वेश्चन नंबर बी. लेट्स सी बाय व्हाट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन नंबर सी. सी में क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन वी विल सी द सॉल्यूशन का डिस्कशन. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस prepare the sales return book of K and Company, a ready-made garment dealer. Sales return book recall कीजिए. Sales return book में क्या आता है? Whatever goods I have sold to my customer on credit, if it comes back, it has to be recorded. कौन से वैल्यू पे? सेल्स आप नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट. ऑब्वियसली रिटर्न होगा तभी भी आपको नेट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है. क्लियर? Let's see transaction number 1. That is 6th December को बोल रहे हैं. Return received from AR store 30 shirts at 300 and 15 trousers at 500 each. 30 shirts क्या प्राइस है? 300 रुपया, मतलब 9000. 15 trousers at 500 each, that is 7500. टोटल कितना हो जाएगा? 16500. उसमें क्या करना है? 8% डिस्काउंट माइनस करना है. सो हाउ द प्रेजेंटेशन विल बी? द प्रेजेंटेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस. सबसे पहले आपका फॉर्मेट बराबर होना चाहिए. डेट, नेम ऑफ बायर, क्रेडिट नोट, डिटेल, LF एंड अमाउंट. डिटेल इज फॉर व्हाट? द वर्किंग पार्ट ऑफ इट, जो हमने अभी डिस्कस किया. इस तरह से प्रेजेंट होगा. 16500, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 8% माइनस कर दीजिए, दैट इज 1320. आउटर कॉलम 15180. फाइन. So let's move on to the next transaction. What is the next transaction? Say the 12th December, Modern Tailors returned 10 frocks which were sold on cash at 200 each. Now this was sold on cash. So obviously इसका जो return आएगा will not be recorded in the sales return book. उसका note डाल दीजिए, that is sufficient. Then goes to the 16th December. They are saying return received from Tulip Stores 12 टी-शर्ट एट 100 रुपीज ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%. तो कितना टी शर्ट है? 12 टी शर्ट्स, 100 रुपया हर एक का है, 1200 हो गया. 10% ट्रेड डिस्काउंट 120 हो गया. नेट वैल्यू 1200 माइनस 120, 1080 का वैल्यू आना चाहिए. तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए विथ वर्किंग एंड फाइनल टोटल कर दीजिए 16260. क्लियर? आई होप इट हेल्प्स. इस तरह से हम आगे का सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे. शेयर इट विद समवन हु नीड इट. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.